Hello viewers, today I am going to discuss a very important topic of organic chemistry, electrophilic aromatic substitution reaction. It involves substitution of a hydrogen atom from an aromatic ring attached to aromatic ring by the use of reagent electrophile supported by base. Yet this hydrogen atom is replaced by electrophile. It involves substitution of a hydrogen atom attached to aromatic ring by the use of electrophile and base as reagent. This reaction is completed in following steps. Step 1. Electrophile attacks to the electron cloud of benzene ring to form a pi complex which rearranges to form sigma complex. This is slow step. इसको सिंपल वे में समझा जा सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक किया, इसके इन्फ्लुएंस में ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गया। इस तरह एक रिएक्शन इंटरमीडिएट एरेनियम कैटायन बन रहा है जिसका ये रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिखा जा रहा है और ये रिजोनेंस हाइब्रिड हुआ। In this electrophile combines with pi electrons of benzene to form pi complex which is rearranged to form sigma complex or arenum cation stabilized by resonance. Step 2. Now, in second step, base removes a proton from the arenum cation to form substituted product. This is a fast reaction. So, first step is slow in the determining step, so rate of reaction directly proportional to substrate and electrophile. Cleavage of CH bond occurs in fast step, second fast step, the fast step, so it does not exhibit any isotopic effect. मतलब सी हाइड्रोप्रोटियम हो, ड्यूटेरियम हो, ट्राइटियम हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। So reactivity of C6H6 is equal to C6D6 and C6T6. First step का molecule forming more stable arenum cation in step 1 due to presence of electron releasing group has greater reactivity in EAS reaction and vice versa. Very important, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। वैसा कोई एरोमेटिक मोलेक्यूल मोर स्टेबल एरेनियम कैटायन बन रहा है और कैटायन स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। ये कुछ एरोमेटिक मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं आपको, इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। फर्स्ट पहले प्लस एम इफेक्ट देख रहे हैं NH2, उसके बाद OH, then OCH3, then NHCOCH3, then OCOR. These groups are showing plus M effect. Then hyperconjugation CH3, CH2SCH3. These are activating groups. Then normal benzene. Now minus I effect F and Cl. इसके बाद माइनस एम इफेक्ट 13 में COR, then CONH2, now 10 COR, CONH2, then 9, इसके बाद 8 CHO, then 14 NO2, 16 CN and lastly NO2. Nitration of benzene, conc HNO3 with conc H2SO4 NO2.
The HNO2 reacts with H2SO4 gives electrophile NO2 plus and base HSO4 minus. In this reaction, HNO3 behaves like base. First step, similar mechanism. NO2 attacks on benzene molecule to form arenium cation. Second step, it loses proton to form nitrobenzene. एक important addition of KHSO4 to the reaction mixture is just decrease in rate of reaction. The reaction is directly proportional to concentration of electrophile NO2. तो आप KHSO4 ऐड करेंगे मतलब HSO4 ऐड करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा और NO2 प्लस का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा. Halogenation of benzene. Halogen with any Lewis acid. When we use Cl2 with anhydrous AlCl3, Cl plus electrophile and AlCl4 minus base. Similar mechanism, Cl plus attacks to benzene molecule, form arenium cation, which loses a proton to AlCl4 minus as substituted product. For bromination, Br2 and FeBr3 are used as reagent to produce Br plus and FeBr2. I2 is so unreactive, so iodination is carried out in presence of oxidizing like HNO3. HNO3 gives I plus plus 2. Sulfonation. For sulfonation, reagent is fuming sulfuric acid or conc H2SO4. If you use conc H2SO4, two molecules conc H2SO4, it will SO3, H3O plus and HSO4 minus. HSO4 minus. Here SO3 behaves like electrophile, resonating structure में दिखा रहा है सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज. इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन SO3 attacks on electron cloud of benzene ring. Now this proton was removed by HSO4 minus. Now this sulfonate, an ion is protonated by H3O plus to give sulfonic acid. For sulfonation, benzene we use conc H2SO4 or better fuming sulfuric acid to shift equilibrium in the right side. On the other hand, अगर आप if you dilute H2SO4 or easily pass a steam through desulfonation occurs. In desulfonation, SO3 में H plus ion is electrophile attack, and after this SO3 is removed. Friedel-Crafts alkylation. Reagent is alkyl halide with Lewis acid. If you use CS3, Cl and AlCl3, CS3 plus and AlCl4 minus, CS3 plus behaves like electrophile, combines with electron cloud to form arenium cation which loses a proton to form toluene. If you use N-propyl chloride with AlCl3, first N-propyl cation is produced which undergoes rearrangement to form isopropyl cation. The electrophile is isopropyl cation, so product is isopropyl benzene. So the carbocation produced in the produced as reagent may undergo rearrangement. एक दूसरा एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, ये CS3 whole 3 COCl with AlCl3. Carbocation produced is CS3 whole 3 CO. This ये CO group निकल के ये tertiary butyl carbocation बनाएगा as electrophile and you will get tertiary butyl. Reactivity of alkyl halide RF greater than RCl greater than RB greater than. This depends on complexing property of halide ion. F minus has maximum complexing property, so RF is most reactive. In terms of alkyl halide, 3 degrees most reactive, then 2 degrees, then 1 degree, then methyl. Alkene with alcohol, alkene alcohol or ether with protic acid or Lewis acid can also use as reagent.
Alkene with protic acid form carbocation. Alcohol with protic acid form carbocation. This is an example of intramolecular alkylation. Protic acid H plus forms a carbocation, attacks on this for product. Friedel-Crafts acylation. Reagent is acid chloride or acid anhydride with Lewis acid. अगर आप हम एसिड एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करते हैं तो फर्स्ट एसिड क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड, इट देन रिएक्ट विद AlCl3 to form acyl carbocation. So actual reagent is acid chloride because acid anhydride is first converted to acid chloride. Acid anhydride AlCl4 minus acylation reagent. The acyl cation is highly stable, so there is no possibility of any reagent. Acylation is in both alkylation and acylation, does not occur in deactivated benzene ring. So acyl group is deactivating group, so polyacylation does not occur. Which are some examples of acylation? Acid chloride is benzoyl chloride. So benzophenone, this is also called Schotten-Baumann reaction. Intramolecular CO plus 1. This is succinic anhydride. ये कार्बोकेटायन यहाँ अटैक करके ये बन रहा है COH. अब इसको सोडियम अमलगम और HCl से रिड्यूस करेंगे, दिस CO group is reduced to CH2. Other examples of EAS reaction: benzene treated with formaldehyde and HCl. Product is benzyl chloride. H plus attacks on oxygen atom to form this carbocation, which reacts with benzene to form CH2OH. This CH2OH undergo SN reaction. OH substituted by Cl. Determines Koch reaction. Reagent is COHCl and product is benzaldehyde. CO and H plus. In CO negative pole is carbon atom, so H plus attacks on carbon atom from this carbocation, so product is benzaldehyde. Determines formylation. Reagent HC and HCl generate Cl2 followed by hydrolysis. H plus attacks on nitrogen atom, this carbocation is formed, which reacts with benzene to form this, and on hydrolysis is benzaldehyde. EAS reaction of mono-substituted benzene. A mono-substituted benzene when subjected to EAS reaction, three possible products are formed: ortho, meta, and para. Actual point of substitution depends on nature of group G already attached to benzene. It is called directive influence. It may be of two types: ortho and para-directing group. A group with plus M hyperconjugation or plus I effect attached to benzene results partial negative charge to ortho and para position. So these position becomes more reactive towards electrophile, and so substitution occurs in ortho and para position. Most of the ortho and para groups are activating, but some cases minus I effect dominates on plus N effect like this, these groups. So these are ortho and para directing group, but deactivates the benzene. These are examples of ortho and para directing group. यहाँ तक एक्टिवेटिंग है, ये तीनों डीएक्टिवेटिंग है. Para substitution dominates over ortho substitution due to steric effect. Now meta directing group. Any group with minus M and minus I results partial positive charge on ortho and para position. So electrophile attacks on meta position. So electrophile attacks on electron rich center. Higher ortho and para position is electron deficient. So it is called meta directing group. These are examples of meta directing group. Some examples: CO,
and CNH. These two groups, ये अपने ऑक्सीजन साइड से प्लस एन इफेक्ट शो करता है और सीओ साइड से माइनस एन इफेक्ट होता है। सिमिलरली एनएच नाइट्रोजन साइड से प्लस एम, सीओ साइड से माइनस एम, एनएच। तो इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये रिंग एक्टिवेट हो रहा है और इसके पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यूनिक चीज, ये बाइफिनाइल कंपाउंड, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, always substitution occurs on para position of one substituted ring. This is ये हायर स्टडीज की बात है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। EAS रिएक्शन ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यहाँ दो सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट आना है। If directly influence of two substituents coincide to each other, and there is no confusion, both ortho and para directing group. So this is ortho for both. This is ortho for methyl and para for hydroxy. This is ortho for hydroxy and para for methyl. So further substitution occurs in ortho. This product is minor product or aesthetically steric hindrance. NO2, CS3 ortho and para directing group, NO2 is meta directing. This position is ortho for CS3 and meta for NO2. This position is para for CS3 and meta for NO2. So electrophilic substitution occurs on this point. Both are ortho and meta directing group. So this position is both meta for both NO2 group. When directly influenced two substances do not coincide, CS3 and OH, both are ortho and para directing group, but OH is a stronger activating group, so product are in accordance with more activating group, a stronger activating group OH. CS3 and NO2, ortho and para and meta. The product is in accordance with activating group CS3. Two very important question. I have to convert benzene to this compound. इसके लिए मोस्ट सुटेबल मेथड कौन हो सकता है? देखें, दो चीज ध्यान रखना है आपको कि अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन डज नॉट अकर इन दी एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग। अल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो देखिए यहाँ नाइट्रेशन हो गया और तब एसाइलेशन नहीं होगा, डिस्कार्ड हो गया। नाइट्रेशन के बाद अल्काइलेशन नहीं होगा, नाइट्रेशन के बाद इसको रिड्यूस करके एमीन ला रहा है, तो एमीन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा, तो मेटा नहीं होगा। यहाँ ये पहले एसाइलेशन कर लिया, एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप मेटा डायरेक्टिव, सो NO2 कम्स एंड मेटा पोजीशन। अब रिड्यूस करते हैं जिंक अमलगम से, तो बोथ CO एंड NO2 ग्रुप रिड्यूस एंड दिस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। Second, best method, this one. बेंजाइल अगर ग्रुप डालते हैं, उसके बाद ब्रोमिनेशन करते हैं, तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप हो जाएगा, बेटा पर नहीं जाएगा। ब्रोमिनेशन में भी तो भी नहीं होगा। थर्ड में देखिए, CH3 डाल के एसाइल ग्रुप डाल दें, बेंजाइल ग्रुप डाल दें। अब हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो मेटा पर ब्रोमिनेशन होगा, उसके बाद इसको रिड्यूस कर देते हैं। दिस वन, मिथाइल, पहले मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद और ऑर्थो पर ये ग्रुप डालेंगे, इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अगर ये यूज करेंगे तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा और ये नॉर्मल ब्यूटाइल नहीं जाएगा। टू में पहले ये एसाइल ग्रुप डाल देते हैं, रिड्यूस करके ले आते हैं, तो एसाइल में तो रीअरेंजमेंट होना नहीं है। इसके बाद इसका सल्फोनेशन करते हैं, तो ये पैरा पोजीशन ब्लॉक हो जाएगा ड्यू टू सल्फोनेशन। उसके बाद तब इसका अल्काइलेशन करते हैं ऑर्थो पर,
एसाइलेशन, उसके बाद उसके बाद ऑर्थो पर CH3 आ जाएगा और उसको एसिड के साथ हीट करेंगे। एसाइलेशन फॉलोड बाय, उसके बाद एसिड का हीट डीसल्फोनेशन हो जाएगा, आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। EAS reaction in polynuclear compound, this is for IIT advanced, not necessary for NEET students. Naphthalene, E plus can attack on 1 and 2. ये दो रिएक्शन इंटरमीडिएट है। 1 सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन इंटरमीडिएट का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है और 2 सब्स्टिट्यूशन का ये हुआ। एरेनियम के केटायन इन 1 सब्स्टिट्यूशन हैज 2 रिलेटिव है बेंजीन वाइड रिंग, एक ये और 1 सब्स्टिट्यूशन में 1 और 2, ये दो देखिए बेंजीन वाइड रिंग, लेकिन 2 सब्स्टिट्यूशन में बस एक ही के पास बेंजीन वाइड रिंग है, ये मोर स्टेबल होगा और वो 1 सब्स्टिट्यूशन इज फेवर्ड। pyridine, अगर यहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट का ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुआ और ये हुआ, तो 2 सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें देखिए 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके दो ही ये फेवर्ड होगा। चलिए पायरोल था, नो pyridine, आप यहां सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और यहां सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो 3 रिजोनेटिंग, बट ये जो है नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसलिए अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए सब्स्टिट्यूशन फेवर्ड होगा। दैट्स ऑल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द channel and press the bell icon.